So performance art is where an artist uses his or her own body as a medium. Body becomes a form of art also, a side of art, but also a medium through which you express whatever your feelings are, whatever you want to comment on. Performance बहुत डिफरेंट है फ्रॉम परफॉर्मिंग आर्ट्स, ये एक मिसकंसेप्शन है, क्योंकि परफॉर्मेंस में what you're striving to do is you are trying to find your own authentic state of being, which is true, most true and most raw, most lifelike. So उसमें pretense का कोई element नहीं है, उसमें आप कोई और character नहीं बन रहे हैं, आप you just try to be. Intentional presence है performance art. Performance हर वक्त हो रही है मेरे लिए, अभी भी हो रही है, मेरी बॉडी के अंदर हो रही है, सांस लेना, दिल का धड़कना, आँखें झपकाना, everything is happening already inside my body. मेरे बाहर हो रही है परफॉर्मेंस, मुख्तलिफ लोग चल फिर रहे हैं या मेरी सराउंडिंग में, सो वो तो हो रही है, बट वो परफॉर्मेंस आर्ट तब बनेगी जब मैं इंटेंशनली हाइपर अवेयर हो जाऊंगी कि मेरी बॉडी के अंदर किस तरह, जब मैं सांस कंट्रोल करने लगूंगी या मैं सांस के बारे में अवेयर हो जाऊंगी, अपनी ब्रीदिंग के रिदम के बारे में, अपनी हार्ट बीट के रिदम के लिए, दैट्स व्हेन आई एम इंटेंशनली प्रेजेंट, और मैं उस मोमेंट में बाकी सारी बॉडीज़ को ऑब्ज़र्व करूँगी, उस स्पेस को ऑब्ज़र्व करूँगी, उस स्पेस में मैं जो एक्शंस करूँगी उनको मैं पूरी तरह उन पे रिफ़्लेक्ट करूँ या उनके बारे में अवेयर हो जाऊँ. सो आई थिंक ये होती है कि एक एम्बॉडीड प्रेजेंस, कि मैं डिसाइड कर लूँ कि मैं अब इंटेंशनली यहाँ पे एज अ बॉडी प्रेजेंट हूँ. दैट्स व्हेन इट बिकम्स अ पीस ऑफ आर्ट. सो उसमें इंटेंशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एक आर्टिस्ट की, टू डिक्लेयर कि नाउ आई एम गोइंग टू परफॉर्म, and that's when you perform. So that's what performance art is. And yes, body is the medium. You express through body, yeah, ideas.